Hello students, welcome to the session. In the previous class I discussed with you about the formulas for acceleration, velocity, average speed. Average speed is total distance divided by total time. V equals to S upon T, that is distance upon time, and also velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. And also I discussed with you about acceleration equals to V minus U upon T. So today I will discuss with you about the about some examples that is given in our NCERT book. So let's begin that. So see the example number 8.2. The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. So if the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car. So here the distance is measured by what? The final minus initial, that is 2400 kilometer minus 2000 kilometer, that is the total distance covered by the car, which is 400 kilometer. Next one is the time that is given here, it is 8 hours. So I told you that speed is always measured in kilometer per hour or meter per second. So here V equals to S by T, 400 divided by 8, that is 50 kilometer per hour. So next is average speed. एवरेज स्पीड को हम कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो हेयर इट इज़ it converts this is the answer actually in kilometer per hour, but if we want to convert it into meter per second, then we will multiply by it 50 multiply किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकेंड्स में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 3600 सेकेंड से. 60 minutes multiply 60 second, that is 3600 seconds in 1 hour. So that this answer we will get. The average speed of a car is 13.9 meter per second or 50 kilometer per hour. Next question is, Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another end and back along the same straight path. Find the average speed. Here you also have to calculate the average speed. Average speed equals to total distance covered divided by total time taken. So the total distance is 180 meter in 1 minute. So 180 meter divided by 1 minute equals to 180 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 60 सेकेंड्स में. सो ये हमारा आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज स्पीड अलग था. एवरेज स्पीड हम क्या कहते थे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. बट एवरेज वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्योंकि वो उसने 180 मीटर स्विम किया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो 0 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. सो द एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 8.4. स्टार्टिंग फ्रॉम अ stationary position, Rahul pedals his bicycle to attains a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then यहाँ पर आपको velocity दी हुई है और time दिया हुआ है. Then he applies brakes such that the velocity of a bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration. I gave you the formula for acceleration also
I discussed about this concept also in the previous class. Acceleration equals to v minus u divided by t. V is final velocity, u is initial velocity, and t is the time for the velocity change, and a is acceleration. So here the initial velocity would be 0, final velocity will be 6 meter per second, and t equals to 30 second. So acceleration क्या हुआ, v minus u divided by t, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Always remember the acceleration SI unit of acceleration is meter per second square. The SI unit of speed velocity is meter per second. So in the second case उसने उसकी initial velocity थी 6 meter per second, final velocity थी 4 meter per second. So और time था 5 second. तो acceleration कितना आया, 0.4 मीटर पर सेकेंड. माइनस में आया है यहाँ पर एक्सेलरेशन. द एक्सेलरेशन ऑन द बाईसाइकिल ऑफ द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड केस में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन सिग्निफाइज दैट ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन. ठीक है. सो दिस इज़ द ऑल क्वेश्चन आई नीड टू डिस्कस विद यू. Please do the question that is given here in blue color. I hope you must be able to do it. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.